आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सैनिक इन्वेस्टर की शुरुआत के लिए। आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के हर सैनिक तक हम ऐसी इंफॉर्मेशन ला सकें जिससे कम से कम उसे ये ना लगे कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन कभी थी ही नहीं और मैं इसलिए अपने पैसों का कुछ कर ही नहीं पाया। मुझे बहुत खुशी है कि इस देश की फॉर्मर वाइस चीफ और यहीं के सदर्न कमांड के फॉर्मर GOC&C लेफ्टिनेंट जनरल ML धर, हमारे 3 जो आज के एक्सपर्ट्स हैं, सुदीप बंदोपाध्याय, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर रिलायंस मनी, नीलेश शाह, वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्विटी ब्रेन्स हैं, और मिस्टर अमोल शिंपी, कॉलियर्स इंटरनेशनल के नेशनल डायरेक्टर हैं। इस शाम की मैं शुरुआत करना चाहूंगा जनरल धर और हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो स्टेज पे आ सके, हम एक छोटा सा लैंप लाइट करना चाहेंगे। Particularly for us soldiers, it is important because as we are growing, inflation is catching on. Most of the elder people's children, they are abroad and they're by themselves here. There are a lot of people wanting to cheat you in the old days. Now, of course, with all these advantages, there are chances that we will not be cheated. So looking at all that, and nuclear families have come about, so what do? We have to look after ourselves. And I think in all this scenario, it is important that we hear these experts, what they have to say. अब जो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा संक्षेप में अपने थॉट्स दें। और सबसे पहले सुदीप। All of our parents, they were very happy investing in National Savings Certificate, post offices and RBI bonds. Believe me, those were excellent saving instruments. I don't think there were any better instruments than those instruments. They used to give us handsome returns. Look at the scenario today. What has happened? These instruments are giving us around 8% on an average return. What's happening? It's very, very clear that if a person is investing only in these traditional instruments, he or she is probably not even covering the inflation. So the person is actually depleting his savings. We really don't have a choice but to come to the financial markets, but to take some risk to protect our corpus, to protect our savings, and definitely to grow our savings. We are retail investors. We are not large institutional players. We are not day traders. We are not traders. We should invest in equity, in the right sector, right company. Stay invested. Thank you. I now request Nilesh Shah to come up and say a few words. He's managed wealth for a lot of high net worth individuals. Then he's run a mutual fund where he took care of retail investors' money, and now he runs his own investment company. India has now today emerged as the world's fastest growing free market democracy. Corporate earnings have been growing at a much faster pace. It's been growing at about 30% annual, 40% annual. And against that, actually the Sensex has of course been growing. But the beauty about equity, and as Sudeep was saying, is looking at the long term. Yes, you can trade. If you're an ace trader, you can trade, make some money in the short term. But in the long term, you cannot make money by trading. I mean, you are going to be in a situation where some trades you will make money, some trades you will lose money. It will probably be a zero-sum game, or probably you will make some returns. The challenge always is, how do you participate in this process of wealth creation? And while it looks difficult, it looks rocket science, it looks complicated, but mind you, it's not so difficult, it is not so complicated. And for those of you, of course, who can do their own research, identify stocks, invest, it's one proposition. But today you have mutual funds, you have portfolio managers who run portfolio management schemes, and various products are there. You could do lump sum investment, you could do systematic investment plan. Some of the systematic investment plans of leading mutual funds have given annualized returns of 40 and 50% on an annualized basis for the last 5 years. And mind you, you people are used to taking risk when you're really protecting the country and fighting on the border. So if you can do that, I'm sure equities is a lot more simpler and a lot less risky than what the general perception is. Thank you very much. Our third expert for the evening will bring in a property perspective. Amol, can we have you on?
रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे 3 अहम जरूरतें किसी भी आदमी की होती है। लेकिन उसमें एक बात अभी और ऐड हो चुकी है, वो है मकान फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और मकान की सबसे ज्यादा अहमियत हम में से किसी को भी नहीं, जो देश के लिए लड़ता है उसको होती है। कई बार पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन जिसमें रहने का अपना मकान है वो शायद जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही हो सकता है। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मकान फॉर इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपको प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए रियल एस्टेट से अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेस्टर को खुद को क्या सवाल पूछने चाहिए, मुझे कितने रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। अगर आप लो रिस्क ले सकते हो और आपका रिटर्न भी आपको लो एक्सपेक्टेड है, बेशक आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, भाड़े से दीजिए, या फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद उसको बेचिए, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज्यादा जबरदस्त इसमें होने की उम्मीद कंपैरेटिवली कम है। आपका रिस्क मीडियम आप ले सकते हो और आपको रिटर्न्स भी मीडियम चाहिए, तो आप ऑफिसेज और शॉप्स में इन्वेस्ट करो, भाड़े पे दे दो, वहां पे शॉप आपका खाली रहने का भी चांसेस है। लेकिन अगर आपको रिटर्न्स रेंटल अच्छे चाहिए तो शॉप में मिल जाएंगे, कुछ सालों के बाद उसके पैसे भी अच्छे मिलेंगे। आपको और लंबा रुकना है और आपको मीडियम रिस्क चाहिए और हाई रिटर्न चाहिए, तो आप बंगलो और रो हाउस के प्लॉट्स में इन्वेस्ट कीजिए। वहां पे कोई एक डेवलपर रहेगा जिसने ये प्लॉट बनाया रहेगा और उसमें टाइटल वगैरह सब कुछ क्लियर रहेगा, आप ले लीजिए, खुशी से बैठ जाइए, कुछ सालों बाद या तो बनाइए या तो बेच डालिए। आपको और ज्यादा रिस्क लेनी है, और ज्यादा रिटर्न चाहिए, आप एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड ले लीजिए। जो लैंड एग्रीकल्चर रही नहीं है वो आप ले लीजिए, कन्वर्ट हो चुकी लैंड ले लीजिए, आपको कुछ सालों के बाद उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे जब आप बेचोगे या डेवलप करोगे। सबसे ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो और आपको अच्छे रिटर्न चाहिए और आपके पास एग्रीकल्चरल का सर्टिफिकेट है, जो लीगली आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो, बेशक एग्रीकल्चर लैंड खरीदो। कुछ सालों के बाद वो नहीं कर सकते हो आप, कुछ सालों के बाद वो सिटी के अंदर आ जाएगी, उस टाइम के जो आपके रिटर्न है वो शायद 100 टाइम्स भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।